स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे फायर अलार्म कन्वेंटियल पैनल के बारे में, जो कि हमारे पास जो पैनल है हिचकी कंपनी का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, इसकी वायरिंग के बारे में बताएंगे, इस कंट्रोल पैनल के बारे में, जो भी सिस्टम है कैसे ऑपरेट किया जाता है, जो भी इसका सिस्टम में का है इंस्ट्रूमेंट, उसके सारे बारे में हम बताएंगे। तो आपको आइए हम चलते हैं सीधा बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक के बारे में जान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारे पास ये जो है वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्या है वायरिंग डायग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बस। तो ये फ्रंट व्यू दिया है, ये फ्रंट व्यू ये पहला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रंट व्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा दिया है ये जो है कनेक्शन डायग्राम, मेन सप्लाई सर्किट। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी के बारे में, यानी जो भी है वो सब आपके सामने है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब देखते जाइए। फिर ग्राउंड फॉल्ट के बारे में भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्राउंड फॉल्ट, फिर पावर आउटपुट सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम इसको सारणी में पहले देख ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस चीज़ के बारे में जानना है, ये जो है नोटिफिकेशन एप्लीकेशन सर्किट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रिलीज के टाइम में ये पढ़ेंगे अबाउट फंक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटस है ये जो है ठीक से एक्सिलरी 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ी थोड़ी आपको इसकी हाईलाइट दिखाते हैं। और ये जो वायर गेज है, वायर गेज फ्रेंड्स, वायर गेज जो वायर का गेज है 18 से 14 WG का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आगे वीडियो में हम आपको और चीज़ बहुत सारे बताने वाले हैं, आप बने रहे लाइन पे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है ये दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, और ये जो हम आपको जूम करके ये जो है, ठीक है, इसमें सिंबल में दिया है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो जूम करके देख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे पास आ गई, और बेसिक के बारे में थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं पावर सप्लाई जो है कितना लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो इनपुट इसका जो एम्पियर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वीडियो में चलते हैं। और ये करंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है 24 घंटा ये दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम जो पैनल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 24 घंटा ऑपरेट रहेगा। ठीक है, और ये करंट है इतना। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम। तो आगे भी फिर चलते हैं, ऐसे ही हमारा है, देख सकते हैं ये बैटरी टाइप 12 वोल्ट DC 7Ah की बैटरी रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, और बैटरी चार्जर वोल्टेज जो है ये रहेगा 27.6 VDC। और हमारा फायर अलार्म कंट्रोल करंट जो है ये है 100 mA विथ बजर का जो रहेगा इतने का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैक्सिमम इसमें दिया है फ्रेंड्स, अभी आगे दिखा देगा। मैक्सिमम करंट ड्रॉ एफिसी फायर अलार्म 600 तक का, इतने तक का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, ये दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसके बाद और आगे हम चलते हैं वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं आपको वीडियो में। ये एक्सिलरी जो है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा क्या हो गया, आप पावर जानते ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो NAC है, फिर जोन है, जोन हमारा ग्रुप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और एबोट हो गया, एक्सटिंग्विशर हो गया, डाटा हो गया, स्टेटस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से, और बस बने रहे हमारे वीडियो में। आपको जो भी है ये आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में कीजिए, तो हम आपको PDF भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम चलते हैं बिना देर के, सीधे आपको पैनल के पास ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इसका वायरिंग डायग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए लाइन पे, हम आपको बताते हैं। Actually, this is a fire extinction system. It fights with the fire automatically. We install these smoke detectors and heat detectors. There are two zones. Zone number 1 smoke detector, and zone number 2 heat detectors. Zone 1, zone 2, and a bell, a flasher, and gas release fan.
disable switch, you can disable. Abort switch, you can increase the countdown or stop the countdown. In case of fire, it will indicate you which zone, zone 1 smoke or zone 2 heat, and it will alert you from the bell. In case of second fire, it will indicate you here and also light the strobe and gas release sign with flasher. After receiving the two signal, the 30-second countdown come here. After finishing the 30-second countdown, the gas will release automatically. As we have a manual extinction release push button, pull it down and push from here. Then 30-second countdown start, and after finishing the countdown 30 seconds, the gas will release. This is a selector switch. You can select automatic and manual. Automatic, it means if the fire will come from the detectors, after the countdown it release. Manual means manually you can press here and after the countdown the gas will release. If you select it manual only, you can release the gas from manually but not from the detectors. However, if the fire will come from the detectors, it will alert you, indicate you, but not release the gas and not start the countdown. This is a enable access switch. If you make it off, all your key switch not work, but the system will work and release the gas. If you put like that, it will give you a beep like this, and all the buttons will work. This is a sound alarm. You can make silence and resound from here, and the internal sound of the panel you can make silence from here, silence buzzer. And this is a reset button. When you press this, it will come in the normal condition. This is a manual extinction disable switch. If you make it enable in normal condition, it will enable. And this is the panel is now in normal condition. If you put it like that, the gas will not release at any cost. However, you press the manually, the fire will come from the detectors like that. But normally we will put it like that. Now the gas will release and it's in working condition. This is an abort switch button. In the last 10 seconds, if you press and hold this, it will hold the seconds on 10. For example, if the countdown starts from 30, 28, 29, 28, 27, 26 up to 10, 9. During this period 10, 9, 8 countdown, you can press and hold this. It will stop the countdown and hold the system. Maybe there is something precious in the room, you remove this thing and you release this, and then the countdown restart from 10, 9 and up to 1 and 0, then the gas will release. Okay, so if we will put it here disable, so the gas will not release. Yes. And but the we have a alarm and we have a flasher here if there is a fire or something. Yes. But gas will not release until we make it on and then make it manual or auto. Yes. Okay. If you put it disable, Yeah. okay, and you check it will release or not. Yeah. Okay, but before switch on, you must be reset the panel in normal condition. Yeah. If it's become normal condition, then you make it switch on. Yeah. Okay. So and these keys, we have the same keys for all the panels, but for each panel we have 4 keys. So these 4 keys we need to keep with us in a safe place, so nobody can touch this keys or panel. Yes, you cannot you can, start the panel. can save. Okay. Thank you so much. Thank you. Welcome.